In this video, I am explaining you Spearman's rank correlation coefficient, which comes under bivariate correlation. This is one of the method for finding out the correlation coefficient, mainly when the ranking is done. Okay. Now, the notation for this correlation coefficient is capital R, and the formula is like this. Capital R is equal to 1 minus 6 times summation of d square divided by n into n square minus 1. Now remember this division is only for this 6 into summation d square. This one is separate. Most of the students make mistake of making this division sign bigger and it goes under 1. So that is a wrong thing. The formula is 1 is separate and then you have this ratio which is subtracted from 1. Now in this formula, what is D? D stands for R1 minus R2. Now R1 and R2 are the two different ways of ranking. Okay. So see, as we are finding correlation, there has to be ranking in two different ways, or ranking with respect to two different variables. So that is R1 and R2. R1 is rank 1 and R2 is rank 2. And capital N stands for number of pairs of observations. So this is my formula. Now let me demonstrate how to calculate rank correlation coefficient for the data where the raw data is given to you. Raw data means ungrouped data for two variables, that is X and Y, is given to you. The ranking will be done by us, that is R1 and R2 will be allocated by us, and then we will substitute the values in this formula and calculate the rank correlation coefficient. Now, as we have seen the Pearson's coefficient of correlation, that was small r, and this is capital R. The formula, the technique is altogether different. Okay, though the data may look similar. You know, in the problem of Pearson's coefficient correlation, also the data was X and Y. The pairs were given to you. And here also it is X and Y pairs are given to you, but the question says clearly that it is rank correlation coefficient to be calculated. So remember that what is asked, whether it is Pearson's correlation coefficient, that is small r is asked, or rank correlation coefficient, that is capital R is asked. Accordingly, the steps will change. And one more thing I want to say, a remark can be given over here, that this R, capital R, is also lying between -1 and +1, which is exactly similar to that of the remark which we had for Pearson's coefficient of correlation. So you will never have a value of capital R as 1 point something or a 5.3, no, more than 1 not possible, and less than -1 is also not possible. It is always between -1 and +1. Now let me go to the problem and demonstrate it. So this is an example. Calculate rank correlation coefficient for the following data. X and Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pairs are given over here. Okay. I have purposely chosen a full-fledged big example. In case of a written examination, this type of example can be asked for 5 marks. Once you know how to do or how to solve such type of examples, even if the data is small, the technique will remain same, only the time and the calculation part will be reduced. So now basically we are going to do two stages. First stage will be ranking will be done. So R1 and R2 ranking will be done, and then the further calculation will be done. So most important part is how to do the ranking. Now for ranking, see X and Y are the two variables. The ranks with respect to X will be denoted by R1, and the ranks with respect to Y will be denoted by R2. Now, ranking is a very simple thing. You can see either you can do the ranking in the ascending order or descending order. पण आपण जेव्हा
मार्क आहेत समजा हे आणि तुम्हाला रँकिंग करायचंय तर नेहमी पहिला नंबर कोणाला देतो, जिसको ज्यादा मार्क्स मिले उसको पहला नंबर देते. सो वी विल डू द रैंकिंग, नॉर्मली वी डू द रैंकिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो जिसको ज्यादा मार्क्स उसको पहला नंबर, उससे कम किसको मार्क्स उसको दूसरा नंबर. दैट इज हाउ यू डू द रैंकिंग. सो व्हेन यू आर डूइंग द रैंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है एक्स का मेरा कॉलम और इसके रैंक्स आएंगे R1 के कॉलम में. ओके, प्लीज ऑब्जर्व दिस स्टेप वेरी केयरफुली. So when I'm doing the ranking with respect to x, x के यहाँ मैं ऊपर नीचे देखूंगी कौन है सबसे बड़ा. Okay, 160 is the maximum value. So what I do is 160 को मेरा पहला नंबर जाएगा. तो मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ कलर. So 160 will be the first number. अभी 160 का रैंकिंग हो गया इसलिए इसको एक छोटा सा टिक कर देते. So you don't repeat the numbers. उसके बाद यहाँ x के कॉलम में आप ऊपर नीचे ऐसे देख रहे हो, जैसे मेरा कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है वैसे. तो 160 के नेक्स्ट कौन है 152. तो ये बंदा आएगा सेकंड रैंक. सो आई एम गिविंग द सेकंड रैंक टू दिस. और ये हो गया रैंकिंग करके, इसे एक छोटा सा टिक कर दिया. उसके बाद आएगा नेक्स्ट नंबर यू कैन सी इज 148. तो 148 को जाएगा तीसरा रैंक. फिर 132, ये 132 है, इसको जाएगा चौथा रैंक. एंड आप ऊपर नीचे देख रहे हो तो 132 के बाद कौन है 115. तो 115 को जाएगा फिफ्थ रैंक. फिर उसके बाद ऊपर जाओ, यहाँ पे 112 आता है. तो इसको कौन सा रैंक जाएगा, नेक्स्ट रैंक जाएगा, दैट इज सिक्स्थ रैंक. फिर 107 आएगा तो ये सेवेंथ रैंक. और 105 लास्ट में आएगा तो ये एट्थ रैंक हो जाएगा. ओके, इस तरह से आई एम लुकिंग अप एंड डाउन इन द कॉलम ऑफ एक्स. एंड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टिक. जैसे जैसे मैं करते जाती हूँ वैसे टिक करते जाओ. ये एक जस्ट एडिशनल स्टेप है कि यू डोंट मिस आउट एनी नंबर या यू डोंट रिपीट एनी नंबर. सो टू टेक केयर ऑफ दैट ये टिक करना जरूरी है. रैंकिंग हो गया, उस नंबर को टिक करो. सो नाउ दिस इज R1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव डन द रैंकिंग. अभी R2 में ऑब्वियसली क्या आएगा, नाउ आई विल लुक एट y. सो विथ रिस्पेक्ट टू y मैं अभी रैंकिंग करूंगी. तो मैं मेरी नजर अभी इस कॉलम पे, y के कॉलम पे मैं यहाँ ऊपर नीचे करके ढूंढूंगी कौन नंबर है, मैक्सिमम कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है. तो लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो यहाँ पे कौन है मैक्सिमम, 142 मैक्सिमम है, इसलिए ये पहला नंबर आएगा. उसके बाद है 140 है, ये 140 इधर है. कर्सर मेरा ऐसे है, इधर जा रहा है. 142 ले लिया इसलिए उसको टिक किया. 140 इज द सेकेंड वन, तो उसको भी टिक किया. उसके बाद 138 आएगा. प्लीज रिमेंबर आई एम लुकिंग ओनली एट द कॉलम ऑफ y. इधर उधर कहीं भी देखना नहीं है. ओके, तो 138 नेक्स्ट है, इसलिए ये इसका नंबर तीसरा आएगा. इसको भी मैंने छोटा सा टिक कर दिया. उसके बाद कौन है इधर ऊपर, ये 135 है, तो उसको दिया चौथा रैंक. 1 2 3 हो गए ना, तो नेक्स्ट चौथा आएगा, फिर इसको भी टिक किया. then what you have is 127, बराबर. so 127 will be the fifth one. उसके बाद ये 123 will be the sixth one. इसको भी टिक किया, इसको भी टिक किया. now what you have next, seventh कौन आएगा 120. okay, इधर ये 120 आएगा seventh. and then last one 110 will be ये वाला, last will be 8 one. तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे देख रही हूँ x y के कॉलम में. and then accordingly I've given you the I've given the ranks in the column R2. so this is most crucial step. most of the students now find it difficult, तो ये बहुत अच्छे से समझ लो. so ranking is done. Further part is very simple, technically calculation करना है सब.
Now the next column will be D. D stands for difference. किसमें से difference निकालना है? Obviously rank का difference निकालना है आपको. So D is R1 minus R2. Okay, so subtraction करते जाओ. 8 minus 7 will be 1. 6 minus 5 is 1. 7 minus 4, 3. 5 minus 6 is minus 1. 1 minus 2 is minus 1. 2 minus 1 is 1. 3 minus 3 is 0. And 4 minus 8 is minus 4. Okay. Then you square D. So 1 square is 1. 1 square again 1. 3 square is 9. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो -1 का स्क्वायर आएगा +1. फिर वापस -1 तो +1. 1 स्क्वायर इज 1. 0 का स्क्वायर 0. -4 का स्क्वायर 16. ओके, नाउ यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स. ये जो है d स्क्वायर का टोटल. नाउ व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज स्टेप्स, सी माय फॉर्मूला इज हियर. Shall I write the formula on the right hand side? What is my formula? Chalo, my color all change. My formula is R is equal to 1 minus, then division sign, 6 times summation of d square upon n into n square minus 1. उसमें से n मेरा 8 है, ये देखो इधर 8 pairs were given, so n is 8. और अभी इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के लिए I need to calculate summation of d square, which is done by these steps. Pehle ranking, then difference, then square, and then total. Now this total comes out to be vertical total comes out to be 30. So let us do the substitution in this formula. 1 minus 6 times 30 divided by 8 into, I'm doing the substitution, 8 square minus 1, which is 1 minus 6 into 30 upon 8 into 8 square is 64. 64 minus 1 is 63. Now I will do the simplification over here. If you have a calculator, if you are using the calculator, you can do this calculation part on the calculator and then subtract it from 1. वो भी कर सकते हैं, लेकिन simplification करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं. So यहाँ पे आएगा 3, okay, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. ये एक हो गया. 3 1s are, 3 2s are, 3 1s are. फिर 2 2s are 4 and 2 15s are. Then 3 5s are and 3 7s are. बस इतना रह गया. Okay. So what is left is 5 in the numerator and 7 2s are 14 in the denominator. Now this can be done like this. Go down. So यहाँ पे if you take the LCM, it comes out to be denominator आएगा 14, इधर आएगा 14 minus 5, which is 9 by 14. So you can either keep the answer as 9 by 14, or you can do the calculation on Calc and get the answer in the decimal fraction, which is 0.64. Okay. So I have used the calculator at the very last step. यहाँ पे मैंने सिर्फ Calc use किया है, नहीं use किया ये आंसर रखा तो भी चलता है. Okay. So this is how you get the rank correlation coefficient. Now I am sending one assignment in which one problem as homework is given. You can see here, this problem is given. Okay, this data. I'm sending it as an Google form assignment. Solve the problem exactly in the similar manner
which I have solved, in which I have solved this. Get the answer, so that will give you practice for solving. You will also get the practice of how ranking is done and all. The final answer, that is the answer of R. R का जो भी answer आएगा, so there will be 4 options given in the, you know, option part in the Google form question. उसमें से correct answer tick करो and you just submit the assignment. Okay. So you know whether you have done it correct or wrong. When you submit it, आपको answer भी दिखता है उधर screen पे. And I also come to know कि कितने students ने homework किया है, उनको आया है कि नहीं, whether students have understood or not. Okay, so this is another way of communication कि आप घर में बैठ के सॉल्व करते हो, लेकिन मुझे भी घर में बैठ के समझ में आता है कि whether students are able to understand and able to solve the problem and how many of them have done it. So please watch this video very carefully. You can rewind it and watch it again. Practice करो, solve the homework problem in, and then submit the assignment. उसमें answer डाल के. Okay. Thank you.